ठीक है, so let us use these 12 laws to write the set theoretical proof. ये मैं नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि इंडक्शन चैप्टर में ये सब रिवाइज होगा जो यूनिट 2 का पार्ट है। तो देयर आर सम कॉमन है, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ। आपके यूनिट 1 में भी है, देन यूनिट 2 में भी वो पार्ट आएगा, इसीलिए मैं यूनिट 2 में वो सिखाऊंगा क्योंकि यूनिट 1 बहुत बड़ा है। तो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल कवर इट इन सम ऑफ द अदर यूनिट। सो डिराइविंग, फॉर एग्जांपल मैंने ये जो टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ फंक्शंस, वो भी नहीं पढ़ा है क्योंकि यूनिट 4 में वो फंक्शन डिटेल में आ रहा है, तब जाके हम करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए कुछ कुछ पार्ट आप देखोगे सिलेबस का, तो मैं नहीं रहा हूँ क्योंकि वो बाद में बाकी के यूनिट्स में कवर होगा। ओके, तो डोंट वरी, आपको जितना सिखाया जाएगा उसी के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। So let us prove the using the laws. So यहाँ पे हम प्रूव करते हैं, construct the algebraic proof for all sets A, B and C. What we have to prove? A union B, this bracket minus C is same as A minus C union B minus C. तो इसको प्रूव करते हैं। Let us start writing proof of this. Okay. Let us write the proof. Start with LHS. What is LHS? A union B ब्रैकेट माइनस सी। अभी क्या करना है आपको कि ये माइनस का एक लॉ आता है, दैट इज सेट डिफरेंस लॉ। व्हाट इज सेट डिफरेंस लॉ सेज? आई विल यूज सेट डिफरेंस लॉ व्हिच सेज दैट a minus b is same as a intersection b complement। याद रखो क्या है, a minus b is same as a intersection with b complement। दिस इज योर सेट डिफरेंस लॉ। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या है, ये फर्स्ट सेट है a यूनियन b, व्हाट इज द सेकंड सेट c। तो इस लॉ को अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज a यूनियन b इंटरसेक्शन विथ c कॉम्प्लीमेंट, सेकंड सेट का कॉम्प्लीमेंट। सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज सेट डिफरेंस लॉ, वो रीजन मैंने दे दिया। अभी नेक्स्ट मैं कम्यूटेटिविटी लॉ यूज करूंगा। व्हाट डज कम्यूटेटिव लॉ सेज? कम्यूटेटिव लॉ, what does commutative law says? Anyone remember क्या है commutative laws? I will write in red. A union B is same as B union A and A intersection B is same as B intersection A. These are called as a commutative law. So ये law use करेंगे तो मेरा क्या होगा, this is same as C complement intersection A union B. Okay. The next law is called as distributive law. What does distributive law says? Anyone remember what is distributive law? रिवाइज करना पड़ेगा अगर algebraic proof लिखना है तो। Distributive law says A union B intersection C is same as A union B intersection A union C. Next type of distribution law is like this, A intersection B union C. Yes, tell me, इसका क्या होगा? A intersection B union with
A intersection C. सो दिस इज अगेन द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है. दिस इज यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन. सो लेट अस यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कैन आई राइट C complement intersection A union with C complement intersection with B? Can I write this? Yes or no? Can I reverse this? Can I write A intersection Yes. C complement union with B intersection C complement? Why? Again I am using which law? Commutative law. So I will write commutative. तो आप जो भी लॉज यूज कर रहे हो लॉ का यहाँ पे रीजनिंग दो. This is by the commutative law. What is next? Again set difference law. What does set difference law says? Set difference क्या बोलता है? अगर यहाँ पे जो अप्लाई किया है, देखो माइनस है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ. यहाँ पे क्या है? उल्टा है, कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन है. तो आई कैन राइट दिस एज A माइनस C यूनियन. सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? B माइनस C. अगेन दिस इज बाय सेट difference law. Okay, which is nothing but your right hand side. So you have proved that LHS is equal to RHS. अभी मुझे बताओ कौन सा मेथड इजी है? क्या मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ दूसरे मेथड से? यस ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ. मैं लूंगा x belongs to the first set, I will show that x belongs to the second set, and then I will take the element x belongs to the second set and I will show that it is belong to the first set. तो भी ये प्रूव होगा. यस और नो? तो अलग अलग तरीके होते हैं. ये अल्जेब्रिक मेथड से प्रूफ आपका शॉर्ट हो जाएगा. दोनों प्रूफ करेक्ट है. बट वो जो 12 प्रॉपर्टीज दी गई है, 12 सेट आइडेंटिटीज दी गई है, उसमें से कोई आइडेंटिटी प्रूव करना है तो आपको सेट थ्योरेटिकल प्रूफ ही लिखना है. अगर उस आइडेंटिटीज के अलावा कुछ प्रूव करना है तो आप आइडेंटिटीज यूज करते हैं, राइट? आइडेंटिटीज को आइडेंटिटीज से कैसे प्रूव करोगे? तो इसीलिए वो जो 12 आइडेंटिटीज सेट की दी हुई है उसको अगर प्रूव करने बोलेंगे, जैसे कि इसमें तो यहाँ पे प्रूव दैट डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द सेट. अभी ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? ये आइडेंटिटी है सेट का. तो ये आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए आपको सेट थ्योरेटिकल प्रूफ ही लिखना पड़ेगा. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर द सेट. तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करना है तो आपको सेट थ्योरेटिकल प्रूफ ही लिखना पड़ेगा. उसमें आइडेंटिटी प्रूफ नहीं चलता है, क्योंकि आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आइडेंटिटी यूज करोगे तो क्या फायदा. बट आइडेंटिटीज के अलावा कुछ प्रूव करना है तो उसके लिए आप आइडेंटिटीज से अलजेब्रिक प्रूफ लिख सकते हो. लेट्स राइट द सेकंड प्रूफ. नाउ यू गोइंग टू टेल मी हाउ टू आई राइट. फर्स्ट प्रूफ स्टार्ट्स विथ LHS. What is LHS here? A minus A intersection B. What I will use next? अगर डिफरेंस है, सेट डिफरेंस है, तो कौन सा ला यूज करूंगा? टेल मी हाउ आई कैन यूज सेट डिफरेंस लॉ. कैसे लिख सकता हूं मैं? एनीवन? इसमें सेट डिफरेंस लॉ कैसे अप्लाई होगा? आपके सामने मैं लॉ रखता हूं तो आपको डायरेक्ट अच्छा लगेगा. ये वाला लॉ सेट डिफरेंस लॉ क्या बोलता है? देखो, A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. याद कर लो, 1 मिनट याद कर लो. A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. याद आ गया? अभी ये यहाँ पे यूज करो, माइनस साइन है
तो व्हाट इज माइनस साइन के लिए मैं क्या यूज करूंगा? पहला सेट एज इट इज इंटरसेक्शन विथ सेकेंड सेट का कॉम्प्लीमेंट बाय द विच लॉ? सेट डिफरेंस लॉ. सेट डिफरेंस लॉ. ओके. नाउ व्हाट इज दिस सेकेंड सेट? इसको कैसे लिख सकते हैं? बीच में कौन सा साइन आएगा? हेलो. Union. And which law is I am using over here? निगेशन के लिए जो लॉ यूज होता है दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ. व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? सेज A intersection B complement is equal to A complement union with B complement. And अगर यूनियन है A union B ब्रैकेट complement is same as A complement union B complement. अभी मुझे को इसको कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? What do I use for combining these two? Distributive law. Distributive law. So A intersection with A complement union A intersection with B complement. Can I write like this? इसको कौन सा लॉ बोलेंगे? Distributive law. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो उसका आप यहाँ पे मेंशन करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है. व्हाट इज A इंटरसेक्शन विथ A कॉम्प्लीमेंट? Empty. एम्प्टी सेट यूनियन विथ A intersection with B complement. By which law? A intersection A complement is empty. Let us कौन से लॉ के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि A intersection empty set is sorry A intersection A complement is empty? कौन सा लॉ है? कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी सेट. ओके. तो इसको रीजन आउट क्या करेंगे हम लोग? वी विल रीजन आउट दिस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ. अगर एग्जाम में दिया नहीं गया है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, सेट थ्योरेटिकल मेथड भी यूज कर सकते हो और ये भी. ओके. कैन आई राइट दिस एज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ एम्प्टी सेट? Yes. कम्यूटेटिव. अगेन यहाँ पे क्या होगा? कम्यूटेटिव लॉ यूज होगा. अभी नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? एनीथिंग यूनियन विथ एम्प्टी सेट इस क्या होता है? वो सेट सेम रहता है. बाय विच लॉज? आइडेंटिटी लॉज विच सेज दैट A यूनियन एम्प्टी सेट इज A. राइट. तो ये लॉ कौन सा है? A यूनियन एम्प्टी सेट इज A. लॉ इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ. तो आइडेंटिटी लॉ मैं यहाँ पे यूज करूंगा. सिंस यू डोंट हैव बुक्स तो देयरफॉर मतलब मैंने तो आपको आपके ग्रुप में बुक्स लिंक सेंड किया है. ओके. so this is nothing but only A intersection B complement. The law by which this is true is called as identity laws. Identity law says that any set with union with empty set will give back you the same set. So this identity law अभी क्या है? A union B complement. What does this mean? Set A difference law. minus B. This is called as set difference. Set difference is very important. बहुत सारे इसमें सेट डिफरेंस आपको यूज करना है. A minus B is equal to A intersection B complement. So this is called as set difference law. So now can I write? So this completes the proof. Yes or no? No.
I have to write this is same as RHS. This is same as LHS. So we start with LHS, we end up in the RHS. Therefore, we have shown that A minus A intersection B is equal to A minus B. मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ आपको. So this is your A, this is your B. What is A minus B? All the elements which are present in A, which are not present in B. तो A में से मैंने B सब्ट्रैक्ट किया, मतलब क्या किया, B के सभी एलिमेंट हटा दिए. सेकेंड, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ B के सभी एलिमेंट हटाने से मैं ये जो कॉमन एलिमेंट है वो हटाता हूँ, तो भी मुझे यही सेट मिलेगा, राइट? Yes. तो मैं B के हटाऊं या A माइनस B के हटाऊं, A इंटरसेक्शन B के हटाऊं, दोनों में मुझे आंसर सेम ही मिलने वाला है. तो वेन डायग्राम से आपको एक आइडिया आता है कि हाँ ये करेक्ट है या ये रॉन्ग है. तो कभी भी मतलब कुछ भी कंफ्यूजन हुआ, वेन डायग्राम बनाओ, उससे पता करो कि वो एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं करता है. ओके, तो कभी कभी कुछ प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते, तो उसके लिए एग्जांपल्स देने पड़ते हैं आपको. ओके, so let me take that example as well. For example, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल. ओके, काउंटर एग्जाम्पल आपको कब देना पड़ता है, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सेट प्रॉपर्टी ट्रू, A minus B union B minus C is equal to A minus C. Is this property true? Let us draw the diagram. आपको वैसे नहीं समझेगा, ठीक है? Let us draw diagram over here. What is left hand side says? This is set A, this is set B, and this is set C. What is A minus B? A minus B क्या सेट हुआ? ये पार्ट, B के एलिमेंट हटा दिए, मतलब ये थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, ये नहीं समझेगा आपको. This is my set A, this is my set B, and this is my set C. Now is it clear? Yes, sir. Okay. B, A में से B हटा दिया तो मुझे ये पार्ट मिलेगा, राइट? ओके, अभी और क्या है अपने पास, B इंटरसेक्शन C. B इंटरसेक्शन C मतलब क्या है, मुझे B में से C को हटाना है, मतलब ये वाला पार्ट जो है C का, ये वाला पार्ट को मैं हटा दूंगा, तो मुझे ये पार्ट मिलेगा. इज दिस करेक्ट? B minus C. The elements which are present in B but does not present in C. Is this correct now? तो ये लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम हुआ LHS. व्हाट इज RHS का डायग्राम क्या है, देखते हैं सेम लाइन पे. RHS का डायग्राम क्या आएगा, ABC. A माइनस C मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ये पार्ट के एलिमेंट ले रहा हूं, A में से ले रहा हूं, C में से नहीं ले रहा हूं. इज दिस टू डायग्राम सेम? No. तो ये ट्रू नहीं होता है. तो ये ट्रू नहीं होता है, तो ये डायग्राम से आपको प्रूव नहीं कुछ होता है, डायग्राम से आपको सिर्फ आइडिया मिलता है कि वो ट्रू हो सकता है या नहीं हो सकता है. सो लेट अस राइट दिस पर्टिकुलर थिंग इन द प्रॉपर फॉर्मेट. तो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द एग्जाम्पल. जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये लेफ्ट हैंड साइड का सेट है, ये राइट हैंड साइड का सेट है. ओके, दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किया ABC. कैसे कंस्ट्रक्ट किया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 रीजन बन रहे हैं डिफरेंट, तो 7 रीजन लिए. A में कौन कौन से एलिमेंट होंगे फिर, 1 2 4 5. B में कौन से एलिमेंट होंगे, 2 3 5 6. एंड C में क्या होंगे, 4 5 6 7. ये वेन डायग्राम से निकाला. देन उन्होंने क्या किया, A माइनस B लिखा. व्हाट इज A माइनस B? those element which are present in A but not in B. So उसका क्या आएगा आंसर, 1 and 4 which are present in A but not present in B. What is B minus C? 2 and 3.
एंड व्हाट इज a माइनस सी 1,2। और फिर उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड सेपरेटली कैलकुलेट किया, वी गॉट 1 2 3 4। राइट हैंड साइड सेपरेटली कैलकुलेट किया, वी गॉट 1 2, एंड दोस टू सेट्स आर नॉट इक्वल। सो व्हाट इज द काउंटर एग्जांपल? काउंटर एग्जांपल इज समथिंग विच डज नॉट होल्ड, उसका लिए प्रॉपर्टी जिस मतलब एग्जांपल से वो प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करता, उसको काउंटर एग्जांपल बोलते हैं। तो अगर आपको कुछ चीजें को डिस्प्रूव करना है या फिर बोलना है कि वो ट्रू नहीं है, तो आप क्या दोगे? What you will give? You will give the counter example. Okay? और एक ही काउंटर एग्जाम्पल ये होता है। ओके, so let's come back to the last part of the set theory. Last part of the set theory is called as Russell paradox. ये भी आप algebraic proof से कर सकते हो, deriving general set। उससे पहले एक और करते हैं, ये वाला डेफिनेशन करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का, और उसके बाद रसेल पैराडॉक्स में जाते हैं। ओके, द सेट डिफरेंस, ये नया ऑपरेशन है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट। इसका डायग्राम ड्रॉ करके ही बता देता हूं आपको। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट इज डिफाइंड एज, this is my set A, this is my set B. I want to draw the diagram of A symmetric difference B. The symmetric difference says that how it is defined, A minus B union B minus A. Okay, what is A minus B? Those elements which are part of A and not part of B. Can I write this as A minus B? Similarly, what is B minus A? Those elements which part of B and not part of A. This element. So can you visualize what is a symmetric difference? What is the symmetric difference? इससे visualize कर सकते हो आप? It is defined as A minus B union with B minus A. मैं symmetric difference का और एक आपको मीनिंग देता हूं। It is same as A union B minus A intersection B. Check that. What is A union B? पूरा सेट होगा, उसमें से आपको कॉमन एलिमेंट हटा दिए तो यही सेट मिलेगा ना जो हाईलाइट किया है। यस और नो? हेलो, आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है? एनीवन देयर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो लेट अस राइट डाउन दिस सेट देन। ए में क्या है? 1 2 3 4 है। बी में क्या है? 3 4 5 6 है। सी में क्या है? 5 6 7 8 है। अभी अपने को क्या लिखना है? फर्स्ट पार्ट, A symmetric difference B. What does this set by the definition? A minus B union with B minus A. Write down what is A minus B. क्या आएगा A minus B? Those elements which are present in A but not present in B. 1 2 1 2। कैसे करने का ये पता है, एकदम सिंपल तरीका है 1 को पूछने का, वो A में है। A के हर एक एलिमेंट को B से चेक करने का। A में ही है, B में नहीं है, लिख दिया। 2 A में है, B में है, B में नहीं है तो लिख दिया। 3 A में है और B में भी है, कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने का। 4 A में भी है, B में है, कॉमन एलिमेंट है तो नहीं लिखने का। ठीक है, अभी B माइनस है ऐसे ही लिखते हैं। 3 को पूछेंगे, इज 3 प्रेजेंट इन ए? यस, so we cannot write 3. 4 is it present in A? yes, so we cannot write 4. 5 is it present in A? नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 and we can also write 6 क्योंकि 6 भी A में नहीं है।
माइनस कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, ए में से एलिमेंट को घटा रहे हैं, बी में से एलिमेंट के ए में से घटा रहे हैं। तो व्हाट इज 1 2 यूनियन पाई 6? 1 2 5 and 6, राइट? व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? अभी आप मुझे बोलो। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड अनलेस यू टेल मी। व्हाट इज बी माइनस सी? क्या लिखूंगा मैं फर्स्ट स्टेप में? B minus C union C minus B. अभी मुझे बोलो बी माइनस सी कौन सा सेट है? टेल मी what are b minus c, which elements are present in b minus c? 3 4. 3 4, which are part of b but not part of c, union with. What is c minus b? 7 8. 7 8. What is the answer? union का आंसर क्या मिलेगा? 3 4 7 8. अभी मैं सी पार्ट आपके ऊपर छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए, मैं डायरेक्टली डी पार्ट करता हूँ। ए इंटरसेक्शन, सॉरी सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन सिमेट्रिक डिफरेंस सी। तो पहले मैं क्या करूंगा, तो लेट्स राइट दिस डी। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वेयर वी कैलकुलेट हियर। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी 1 2 5 6। अगर कैलकुलेटेड नहीं होता तो मैं कैलकुलेट करता यहाँ पे पहले ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये पूरा रिपीट कर देता, मैं फर्स्ट वाला पार्ट पूरा रिपीट कर देता अगर नहीं कैलकुलेटेड है, ठीक है? I can write we have already this particular set, therefore A intersection B intersection C is equal to, क्या लिखोगे आप? A intersection B minus C, this is your first bracket, union with C minus A intersection B. Is this correct? By the definition. Yes, sir. Yes. So what is this? 1 2 5 6 minus C क्या आएगा? 1 2 5 6 minus C करो, कौन से एलिमेंट होंगे? 1 2. 1 2 which are present in the first set, which does not present in the second set. What is C minus A union B, A intersection B? C में कौन कौन से सेट है? 5 6 7 8, 5 7 8 8. 8. So these are uncommon element, that is 7 8, which belongs to this set. So what is your final answer? 1 1 2 7 8. 7 8. ओके, तो हमेशा जो हमारे रेगुलर रूल्स होते हैं, क्या करना है, ब्रैकेट को पहले इवेल्युएट करना है। तो ब्रैकेट का वैल्यू पहले फाइंड करना है और बाद में आपको ये सब चीजें करनी है। ओके ओके, तो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द टुडे सेशन, दैट इज रसेल पैराडॉक्स। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो रसेल पैराडॉक्स करते हैं, उसके बाद एक क्विज लेंगे। ये मैं आपको देता हूँ, ये लॉजिकल और इसके साथ इक्विवेलेंस है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ लॉजिक में भी है। इन जनरल आपको क्या करना है, यूनियन इज सिमिलर टू द ऑपरेशन और एंड इंटरसेक्शन इज सिमिलर टू द ऑपरेशन एंड। तो ये लॉजिक में जब करेंगे तो हम रिवाइज करेंगे इसको। ओके, सो वेरी लिसन केयरफुली, लिसन दिस थिंग, रसेल्स पैराडॉक्स। So this is by the Bertrand Russell, जिन्होंने पैराडॉक्स सजेस्ट किया था। What does it says? Most sets are not element of themselves. For example, set of integer is not integer. Set of integer को कैसे लिखते हैं? अरे इतना बड़ा क्यों हो गया? What is the set of integer? 1 2 dot dot dot, then minus 1, sorry 0 minus 1 minus 2
dot dot dot. So this set is not a integer. Set of integer is not an integer. For example, I cannot write z to the set of integer. This thing does not hold. Set does not belongs to the set of integer. So most sets are not element of themselves, but there are some sets which are element of themselves. For example, they have written, say, set A. It is a collection of ideas. So set A is a collection of all abstract ideas. Collection of all abstract ideas. तो आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आती है तो वो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, उसका अगर हम कलेक्शन करेंगे सभी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का, तो ये सोचना भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज ही है। ऐसे कलेक्शन बनाने की भी हमको आइडिया ही आएगी ना। तो दिस आइडिया इज अगेन एन आइडिया, so we can write this here, A belongs to set of A. So there are some sets which are member of themselves. Similarly, there are some sets which does not a member of themselves. Okay, so this kind of thing leads to the particular paradox known as Russell's paradox. तो रसेल ने क्या बोला कि हम अगर इसको एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जैसे उन्होंने ये किया है, सॉरी my lines are not perfect, let me draw it very carefully. He has defined a set. How he has defined? It is collection of all set A such that A is a set and A does not belong to A. जैसे set of integer, as set of integer does not belongs to the set of integer, therefore I can write this Z belongs to A. Is this clear now? जो set अपने एलिमेंट नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? We will include these sets in S. We will include, कैसे इंक्लूड करेंगे? जो सेट खुद के एलिमेंट नहीं होते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल हॉर्सेस इज नॉट अ हॉर्स. Set of all abstract idea will be a set abstract idea. Therefore, we can include that A belongs to A. So we have this kind of set constructed. So he has constructed this set. और वो कैसे सेट बनाया उसने? S be the set of all set that are not element of themselves. Set S is a collection of all sets which are not element of themselves. Then the question arises, क्या question है? Is S an element of itself? What do you think? Is the set S element of itself? So let me explain over here. यहाँ पे बुक में बहुत confusing होगा आपको. Let us write this over here. S is a collection of all set A such that A is a set such that A does not belongs to A. It is a collection of all set which does not belongs to themselves. For example, we have already said that empty set does not belongs to the empty set. Right? We have already discovered this. हमने ये true false में देखा था, empty set does not belongs to the empty set. Then I can include empty set belongs to it. Similarly, set of integer is not an, does not belongs to the set of integer. Therefore, I can include Z belongs to set S. So S का collection कैसे define किया? Those set which are not member of themselves will belongs to the set S. Okay? Is this clear? यहाँ तक clear है? Now the question is, is S is element of itself? What do you think? कोई भी गेस करो, चलो. क्या लगता है?
लेट अस, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये पैराडॉक्स है. इफ आई से यस, देन S belongs to S, right? If I say yes, then I will say that S belongs to S. What does this mean? S will satisfy this property. ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगा. Yes. So I can write next line. S does not belongs to S because it satisfies the defining property. Right? Which will leads to the contradiction. Yes, sir. अगर मैं इसको नो बोलता हूँ, suppose I say answer is no. What does I mean that? S does not belongs to set S. Right? Here मैंने S बोला इसलिए S belongs to S हो गया ना. अभी S मैं no बोल रहा हूँ, मतलब S is not element of itself. Therefore S does not belongs to S. But then it is the defining property. A does not belongs to A. ये वाला property satisfy करता है इसीलिए S belongs to. Again I will get the contradiction. तो दोनों जगह contradiction मिला. So the answer of this question is both S and no. Or I can say neither of S or no. I can write in both way. Both S and no at the same time. So this leads to the paradox. Paradox क्या होता है कि आपको आप कंक्लूड नहीं करते कुछ भी. Then it is called as paradox. तो यहाँ पे भी क्या है? Answer is both S and no. एक ही बार मतलब एक ही सवाल है, उसका आंसर एकदम अपोजिट कैसे हो सकता है? So this is called as a contradiction. So यहाँ पे उन्होंने explain किया है. If I assume that S belongs to S, then S satisfies the defining property of S, and hence S does not belong to S, which this contradicts our the supposition that S belongs to S. Similarly, if we start with S does not belong to S, then S is a set of all such that S does not belong to S. So S satisfies the defining property for S, which implies that S belongs to S. मतलब मैंने अगर S belongs to S लिया तो मुझे मिलेगा S does not belongs to S, and अगर मैंने S does not S belongs to लिया तो मुझे S belongs to S मिला. तो मेरे को दोनों मिल रहा है. Then both we have got that S belongs to S and S does not belongs to S, which is impossible. बिकॉज कोई भी स्टेटमेंट आइदर ट्रू होता है, फॉल्स होता है, बट कोई दोनों एक साथ नहीं होता है. तो ये जो चीज है उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स. बोथ ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम. ओके, so this is defined by Russell, so therefore it is called as a Russell paradox. ठीक है. अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल, मतलब ये जो चीज है वो कॉमन मैन को नहीं समझ. उसने क्या किया कि अगर वो कॉमन मैन को समझानी है तो उसने एक एग्जाम्पल बनाया. वो एग्जाम्पल को हम बोलेंगे बार्बर पजल. तो दिस इज द डिवाइस, मतलब टू कॉमन मैन को ये चीज समझाने के लिए उसने एक एग्जाम्पल बनाया, उसको बोलते हैं बार्बर पजल. तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सप्लेन रसेल पैराडॉक्स विद द एग्जाम्पल ऑफ बार्बर पजल और बार्बर प्रॉब्लम. तो वो आपको ये सब चीजें यहाँ पे जो लिखी गई है वो सब लिखना है. तो बार्बर पजल बोलता है, consider this statement. Let me take this barber puzzle to the next slide. Now is it visible? In a Yes, sir. certain town,
Yes, देयर sir. इज मेल बार्बर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ मेल बार्बर who shaves all those men and only those men who do not shave themselves। मतलब क्या है, लेटस, मेरा इतना डायग्राम करेक्ट नहीं है, मतलब कोई तो ऐसा टाउन है, ओके, उसमें क्या होगा, देयर विल बी मेनी मेंस, 1 2 3 4, ओके। सो लेट मी गो बाय वीडियो। ये मेरा यहाँ पे मैं वीडियो नहीं शो कर सकता शायद। सी दिस वीडियो, देयर इज अ सर्टेन टाउन where the barber will shave all those men who do not shave themselves। मतलब बार्बर का डेफिनेशन क्या बोला है कि बार्बर उन सबकी दाढ़ी करेगा जो खुद की दाढ़ी नहीं करते, ओके। हु शेव्स द बार्बर। तो एक तरीका है कि बार्बर अपने आप की शेव खुद करेगा। अगर मैं ऐसे बोला कि बार्बर अपनी दाढ़ी खुद करेगा, तो मतलब क्या है, बार्बर बिलोंग्स टू दैट सेट जो अपनी दाढ़ी खुद करते। अगर वो अपनी दाढ़ी खुद करते हैं तो बार्बर के पास क्यों जाएंगे? इसीलिए मुझे क्या मिलेगा, बार्बर डज नॉट शेव हिमसेल्फ। मतलब मैंने अज्यूम किया बार्बर ने अपनी दाढ़ी खुद करेगा और मुझे मिल रहा है कि बार्बर उसकी दाढ़ी नहीं करता। अगर अदर वे राउंड लिया कि अगर बार्बर खुद की दाढ़ी नहीं करता है, इफ आई टेक बार्बर डज नॉट शेव हिमसेल्फ, जैसे कि यहाँ बताया बार्बर डज नॉट शेव हिमसेल्फ, देन व्हाट विल हैपन, बार्बर विल फॉल इन दैट सेट, जिस सेट में ऐसे लोग होंगे जो अपनी दाढ़ी खुद नहीं करते, ओके। तो क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ बार्बर, बार्बर सबकी दाढ़ी करेगा जो अपनी दाढ़ी खुद नहीं करते, तो बार्बर शेव्स हिमसेल्फ आएगा। तो ये दोनों वैसे गलत है। तो जो खुद की दाढ़ी नहीं करते वो उनकी दाढ़ी बार्बर करता है, तो दोनों दोनों पॉसिबिलिटी मिला, वो खुद की दाढ़ी भी नहीं करता है, खुद दाढ़ी भी करता है। So both the possibilities are true. Therefore, we get this as a paradox similar to the Russell's paradox. Okay. So let me explain over here in the writing. Sorry. Okay. पहले क्या अज्यूम करना है, देखो आप बोलो। इफ यू अज्यूम बार्बर शेव्स हिमसेल्फ, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर बार्बर अपनी दाढ़ी खुद करता है, देन he belongs to set of men who shaves themselves। अगर वो खुद की दाढ़ी खुद करेंगे तो वो बार्बर के पास क्यों जाएंगे? Who shave, ये कॉर्नर में थोड़ा मिस्टेक होता है, कॉर्नर में अच्छे से आता नहीं है। Who shave themselves, correct? This set people doesn't show by barber, this set of people doesn't show by barber
Hence we get barber also lies in the set. I will get barber doesn't shave himself. Okay. So we assume that barber shaves himself. We got that barber doesn't shave himself. If we other way around, if we assume barber doesn't shave himself, then what will happen? Then what I can say? Then barber falls in the set of man who doesn't shave themselves. Then what will happen? This set of man will shaved by barber ना. अगर वो दाढ़ी अपनी खुद नहीं बनाते हैं तो वो बार्बर के पास जाएंगे. This set of men shaved by barber, and as barber belongs to this set, therefore I can say that barber shave himself. तो ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा? राइट. So we got the both the possibility. आपने assume किया barber shave himself, then we got the barber doesn't shave himself, and अगर barber doesn't shave himself, then we got the barber shave himself. मतलब दोनों में से true ही है. So this is called as a similar to the Russell's paradox. So this example is given to explain Russell paradox. So exam में question आता है explain Russell paradox with the help of barber problem. Okay. So let us stop here. You can join lecture